today what I have planned is that I have came up with a plan that I should give at least key practices, some key practices which you can which anyone, any lay person can also incorporate in daily life, and then can take the advantages out of it. ओके सो कोई भी हो तो प्रैक्टिसेस कुछ इस तरीके से हैं सारी की सारी, उसमें मैंने आसन्स भी कुछ डाले हैं, कुछ प्राणायाम डाले हैं, राइट, एंड देन कुछ टिप्स विच विल बी शेयरिंग रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग. सो अगर कोई इतना ही फॉलो कर लेता है तो उससे भी एक लेमैन को भी बहुत फायदा होने वाला है, राइट. सो उस तरीके से डाला है. अब बाकी तो उसमें अगर आप इफ यू विल कीप ऑन ड्वेलिंग डीपर एंड डीपर, देयर विल बी नो एंड टू इट. अगर हम नॉलेज की बात करें या फिर इंफॉर्मेशन लेने की बात करें या फिर हम एक राइट लाइफस्टाइल की बात करें, तो उसका कोई भी एंड नहीं है, राइट. आप कितना भी आप उसमें जा सकते हैं. ओके सो आज हम बिल्कुल जेनेरिक वे में लेके चलेंगे ताकि एवरीवन कैन स्टार्ट एटलीस्ट, बिकॉज as we know 90% of the population around the world are suffering with one or the other disorders, right, when it comes to stomach related trouble or any disease or illness. Mostly disease and illness starts from stomach, but before that starts from the mind, isn't it? So this and this, they both are interconnected with each other. So that's all, that's also we are going to discuss. क्योंकि काफी बारी क्या होता है, काफी लोग सोचते हैं कि यार मेरे खाने में कुछ प्रॉब्लम है, there is something which is missing in the diet, nutrition, maybe vitamin, minerals, or maybe the kind of food or something. But before that we have to see the psychology as well. Okay, so it is always a holistic approach when it comes to health. हेल्थ को आप खाली एक पैरामीटर या एक फैक्टर को लेके पूरा नहीं कर सकते हो, आपको होलिस्टिक वे में जाना पड़ता है. सो दैट्स आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम की पॉइंट्स टुडे. ओके सो इफ यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन डेली लाइफ विद कॉन्शियसनेस, आई कैन अश्योर यू कि गट प्रॉब्लम्स आपकी एक दो दिन में ही चले जाएंगी, जो भी होंगी, राइट. जो नॉर्मल कॉमन डिसऑर्डर्स होते रहते हैं वो एक दो दिन में ही चले जाएंगे. ऑलराइट, एंड देन also what will happen, you will prevent yourself from any severe disorders or disease or illnesses which might come, in due to lack of awareness of all these things, isn't it? Because mostly kya ho raha hai ki everywhere in the world people are dying with ignorance more than any actual reason. So ignorance is the main culprit, main factor, because we are not aware of the right things. Okay, so in relation to the gut disorder also, or gut health as well, we are going to discuss on few tips, tricks, and some solutions. Or if we are going to apply all these things in daily life, definitely, you are going to save yourself. Okay, so let us start. So as always, I always keep my PowerPoint ready. Today it will be very small because we have a very small session today. So regarding the gut health, let me just remove it. Okay. All right. So gut health. So it is not only limited to your diet. So there is a quote for diet, but it is not limited to diet. So it is like eating healthy can cost you money, because many people, they think that things are very costlier. So I think we should go for some cheaper things, and उससे क्या होगा कि आप थोड़ा पैसा तो बचा लोगे, लेकिन आगे चल के आपके अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो वही पैसा आप अपनी दवाइयों में भी लगाने वाले हो, राइट. तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला. बॉडी द लाइफ ऑलवेज बैलेंसेस इटसेल्फ. सो इट्स बेटर दैट in the beginning only you take care of such things, and you try and incorporate some healthy habits in your life. Get right food, which we are going to discuss. थोड़ा कॉस्टली होगा, कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो हेल्थ इज वेल्थ इन द एंड, इजंट इट. कहाँ लेके जाओगे? जो सारी बातें हम करते ही हैं ऑलरेडी, राइट. बाकी आप पावर पॉइंट्स which are there, you can always look about me and Rehab Yoga family around the world, everything. So first thing we are going to discuss is definitely